If things are going bad in your life, health is not working out, or relationship is not working out, or money is not working out, this is one thing which you can do and fix all of it. Fix your relationship, health, career, money, everything in one go. I do it every single day. You can try it out yourself as well. This technique is called aura cleaning. बहुत सिंपल शब्दों में बताओ तो हमारे आसपास एक एनर्जी चक्र होता है, जो हमारे आसपास एक एनर्जी का ऑरा बना होता है, दैट गोज लाइट और डार्क डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी और वाइब्रेटिंग एट. अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो उनका जो मंदिर का ऑरा रहेगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, पूरा ग्रीन रहेगा शायद तक के, क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी है. इतने सारे लोग आके वहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं, या इतने सारे लोग आके वहाँ प्रे करते हैं, और ऑफकोर्स भगवान जी भी विराजमान है वहाँ पे. अगर आप किसी और जगह जाते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मे बी ग्रेवयार्ड, देयर मे बी द ऑरा विल बी डार्क ब्लैक बिकॉज अगेन देर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी इज रिसाइडिंग देयर. लाइकवाइज हमारे भी आसपास में एक एनर्जी फील्ड होता है which is positive or negative depending on our mood, our thought process, our feelings, our emotions, everything. So today what are we going to do? We are going to learn how you can clean your aura, or how you can change your aura from negative to positive, and as a result you can change your vibrations from negative to positive. You light your incense stick. I'm not doing it right now because I'm sitting in a studio, but you can light it. Once you light your incense stick, you just take it and rotate it in clockwise or anti-clockwise direction. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं. You do that, and while doing that you chant Ho'oponopono. What is Ho'oponopono? It's an Hawaiian technique, comprises of 4 statements. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I've made a separate video on Ho'oponopono. You're most welcome to watch that. But right now you just need to know that it has 4 sentences. Start rotating it on your head and say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Then do this around your face. Be careful, okay? Don't अपने आप को चटका मत लगा लेना. Do it like this. Then do it on your throat. Then do it on your chest. Then do it on your stomach. Like this, go down and do it till your toe. And just keep doing it. Again, don't ask me कितनी बार करना है मैम, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे इसकी एनर्जी से फ़र्क पड़ता है. इसकी जो एनर्जी है, और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू की जो एनर्जी है, दिस 2 थिंग्स विल एक्चुअली क्लीन ऑरा. नॉट द डायरेक्शन ऑफ इट, नॉट द टाइम्स यू डू इट. व्हेन यू आर डूइंग ऑरा क्लीनिंग, एक्चुअली यू आर वर्किंग ऑन योर चक्रास. आपके बॉडी में 7 चक्रास होते हैं. इफ दोज चक्रास आर नॉट अलाइंड इनफ, योर लाइफ गोज लिटिल मिसअलाइंड. वंस यू आर डन विद द फ्रंट साइड, you can visualize that this is your back, okay, and then do it like this for the back. So you're visualizing that this is your back, and do it for the back like this. Once you do that, I extend it further. By the way, मॉर्निंग का मेरा सिंपल रिचुअल है. वंस मैं भगवान के पास लाइट करती हूँ अगरबत्ती, उसके बाद में मैं अपने आप को करती हूँ, फिर मैं मितेश को करती हूँ, फिर जीनी को करती हूँ, और फिर मैं पूरे घर में रोटेट करती हूँ. फुल हाउस, आई जस्ट गो इन एवरी कॉर्नर ऑफ माई होम and I rotate it like this, and I say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Why in every corner of home? Because in the corners of home, there's a lot of negative energy gets stuck. अगर आपने नोटिस किया, आपके घरों में कॉर्नर में ही जाले लगते हैं, कॉर्नर में ही धूल जमा होती है, क्योंकि कोने ऐसी जगह है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है, फ्रंट पे नहीं होता है. आई डू दिस इन बाथरूम एज वेल. आई गो एंड डू इट इन एवरी बाथरूम ऑफ माइंड. बाथरूम is the place where we actually emit our negative energy, right? वहाँ पे क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम वहाँ जाके हमारी नेगेटिविटी डंप कर रहे हैं. सो आई टेक इट अराउंड एंड इट टेक्स ओनली 2 minutes फुल प्रोसेस. अभी आपको शायद ज़्यादा साउंड कर रहा है, मगर आप एक बार लाइट करोगे और करना शुरू करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि इट टेक्स ओनली 2 minutes फॉर यू टू फिनिश द एंटायर होम. वंस इट इज़ डन, यू कैन आइदर कीप इट anywhere. I just put it in a plant and then वो लाइट होते रहती है, पूरे दिन घर में खुशबू रहती है. या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं जला के रखना है तो आप बुझा भी सकते हो. बट दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस विच विल help you increase frequency, help you change or shift from negativity to positivity. Try this out for 11 days and see the shift happening. So we teach this powerful technique in detail in our Wealth Mastery course. Of course, I'm giving you a first lesson free. Yeah, the link is in the description below. I'll share a few stories. Recently, in fact,
I think last week only, when we did the Wealth Mastery course, one of the girls, she went ahead and she did this. She did it only for 2 days, and she had lent money to somebody. It was not a very big amount, and she actually, in her mind, she had write it off. She really thought कि वो पैसे वापस नहीं आने वाले. And after she did this technique for 2 days, third day, that person who had borrowed money from her actually knocked on her door and handed over money to her, which was a pleasant surprise for her. So there are many, many results in the area of health, relationship, career and money. Try it out yourself and let me know what result you got.